concept clear to you, then you can give your questions related to meta ads testing, and I'll take those questions and take things ahead from there. All right. So let's start. And if you have any questions in midway, also, though, let me know by raising your hand, and then I'll try to clarify on the go. Okay, let's start then. Okay, like I think you all can see the screen that I have shared with you. Uh, can you just confirm that on the chat bot? And I'll share the PPT also along with all. Okay, great. ठीक, that's great. So the concept basically meta ads के ऊपर बहुत सारे elements हैं. In overall D2C performance marketing, if you say, we have three major elements. One is landing page, second is creatives, third is meta ad management. Today what we are going to discuss is more about creative along with the meta ads management, how to run test on the creatives that we have created. So we are touching the two pillars of D2C performance marketing. तो creatives के ऊपर start करते हैं on this particular thing. So before starting any kind of webinar that I have done, like recent 4-5 webinars earlier also, I start with one promise to make sure कि जो आपका time period है, the coming time period that you are going to spend 30-45 minutes with me is not wasted in anything. And we make sure कि in the coming 30 to 45 minutes of your time, we deliver all these 4 things that I have mentioned here. The very first thing, you'll have 120% clarity why creative testing is very, very critical. Step-by-step testing framework that we as an agency keep on implementing on the different ad accounts that you can simply go ahead and copy paste. आपको किसी agency को hire करने की जरूरत भी नहीं है. You can just go ahead, try the same thing that I am going to implement here, show you here. Smart budgeting, basically what kind of budgets you need to plan up for your testing and how you can scale. And the copy paste thing, like इस पूरी चीज also I'll give you away in this particular webinar thing. Okay. So let's start from the step number 1. Why creative testing is critical? इससे पहले बेसिक समझते हैं कि creative testing में होता कैसे, like how meta works when you upload some kind of graphic or a video content on meta ads manager, how things work. So creative testing में होता कैसे, let's just assume जैसे हम 10th class में या 11th class में पढ़ते थे, Venn diagrams होते थे. Venn diagram में हम लोग ऐसे करते थे कि there is a big set of audience. Let us the set B, that is the larger audience. Let us assume कि set B का complete audience size है 1000 people. Okay, and then let us assume कि जो testing audience है, that is the set A, that is around 10% of 1000. Let us say जैसे कि आपका कोई फिटनेस का प्रोग्राम है, ठीक है, फिटनेस के प्रोग्राम में आप कोई वीडियो बना के डाल रहे हैं और उस वीडियो का टारगेट ऑडियंस जो है वो 1000 लोगों का है. हम उसमें से एज्यूम कर लेते हैं कि जो हमारा टेस्ट ऑडियंस है उसमें से 100 लोगों का बन रहा है, that is 10%. What happens when you start uploading some kind of graphic or some kind of video on meta ads? It starts to show up on the set number A. That is, Meta will create a subset from the set number B, that is the bigger set. उसमें से एक subset बनाएगा Meta, and that will the particular ad जो भी आप develop करके upload कर रहे हो, that will start in that particular segment of set number A of 100 लोगों का audience. So if you understand this thing, in 2024, जैसे कि मैंने यहाँ पे mention भी किया है, in 2024 हम लोग क्या करते थे, बहुत सारी targeting, बहुत सारे inputs डालते थे. Let's say fitness related जैसे मैंने बात करी, तो उसमें हम लगेंगे, let's say you are doing work in the fitness segment of yoga, let's say for women in the range of 30 to 45. तो सबसे पहले आप gender डालोगे, then you will put some kind of location also, then you'll put some kind of interest demographic targeting also, right? So वो सब करने के बाद आप set number 1 पहले मेटा के लिए define करते थे कि बॉस this is the set number 1 that we are assuming कि ये वाले में आप target करो. Now Meta has changed over a period of 1 year. मतलब 2024 की मैं बात कर रहा हूँ, 1 साल पहले की, जिसमें मैं आपको ये बोल रहा था कि we were using age, gender, demographic, etc. to define this particular set of audience. But now in 2025, Meta does it on its own. जैसे कि आपने कोई क्रिएटिव दिया, आपने कोई क्रिएटिव उसको अपलोड कर दिया मेटा के ऊपर. नाउ मेटा's algorithm will understand on its own कि वो पर्टिकुलर क्रिएटिव मुझे किस इंसान को दिखाना है ताकि आपको एक परचेज या फिर लीड मिल पाए, राइट? सो सेट नंबर बी इज द लार्जर ऑडियंस. सेट नंबर ए उसी ऑडियंस का एक सबसेट बनाया है हमने जिसमें आपका एड पहली बार पुश होगा. Once you allow
particular to go set number A, देन इनिशियल 10-15 लोग अगर उससे इंटरेक्ट करते हैं या फिर 50 लोग उससे लाइक लेट्स से किसी ने परचेज कर लिया, लेट्स से उसने क्लिक करके लैंडिंग पेज देख लिया, तो मेटा विल गेट अ फील फ्रॉम हियर कि सेट नंबर ए जो कि छोटा सबसेट है सेट नंबर बी का, a lot of people are interacting with this particular type of audience. So then Meta will promote your particular graphic या फिर your particular video into the set number B, that is the larger audience, that is 1000 लोगों वाला audience. Is everyone clear on this part? If you want, I can come again. If you have any questions, can you please tell me? Like, कोई भी, you can raise your hand and I'll let unmute that particular person and you can ask the question. Okay, then going ahead. So basically, set number B is the larger audience set. Set number A is the small subset of that large audience, जहाँ पे हम लोग का कम audience है, बट मेटा पहले अपना क्रिएटिव सेट नंबर ए में लॉन्च करेगा, वहां पे फाइंड आउट करेगा इफ पीपल आर इंटरेक्टिंग विद दिस पर्टिकुलर क्रिएटिव और नॉट, एंड देन इफ इट वर्क्स कि इन द सेट नंबर ए में उसको लोगों को रिस्पांस मिल रहा है, लोगों को इंटरेक्ट कर रहे हैं, पीपल आर विजिटिंग योर वेबसाइट एंड डूइंग एड टू कार्ट, मेकिंग अ परचेज, देन मेटा विल प्रमोट दैट पर्टिकुलर ग्राफिक इनटू द सेट नंबर बी. बस मैंने यहाँ पे एक इनपुट आपको ये दिया, दैट इज in the year 2024, that is 1 year, just 1 year back, we used to control Meta by giving an age, gender, demographic, behavior, etc., interest, behavior targeting वगैरह हम लोग करते थे. In 2025, Meta does this targeting on its own. So now what is the change? How it got changed? So this is the screenshot that I took from engineering.fb.com, जहाँ पे सारे अपडेट्स वगैरह आते हैं कि मेटा के ऊपर क्या क्या चीजें नई नई आई है. So basically Andromeda is a Meta's proprietary machine learning system that got implemented in December 2024. जिसके बाद से ये चेंजेस आने लगे जो मैंने अभी यहाँ पे आपको बताया कि we used to control the age, gender, demographic, everything here. Andromeda अपडेट आने के बाद Meta now says कि age, gender, target, demographic ये आप सब मेरे ऊपर छोड़ दो. You just give me the graphic, you just give me the video, I'll do everything on my own. The major targeting happens with the help of a graphic or a video. Getting my point? So मतलब वो तो मैंने एक स्क्रीनशॉट लिया फ्रॉम मतलब मेटा का स्क्रीनशॉट, ये इंग्लिश में सारी चीजें लिखी हुई है, एंड आई हैव गिवन दिस पर्टिकुलर लिंक जहाँ पे आप और डिटेल में पढ़ सकते हो कि एनवीडिया ने इस एंड्रोमेडा को कैसे बनाया, हाउ द थिंग्स डिड शेप अप ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, एंड लाइक ये लॉन्च हुआ था दिसंबर 2024 में, बट वी वर एबल टू सी द चेंजेस हैपनिंग ऑन द एड अकाउंट्स दैट वी मैनेज स्टार्टिंग फ्रॉम अप्रैल मई 2024. उस टाइम से फिर हमारे पास जो कीवर्ड टारगेटिंग वगैरह है वो सब चीजें नहीं चल रही थी. सो व्हाट आई हैव रिटन हियर, एंड्रोमेडा अपडेट. With Meta's latest advancement, we no longer need to manually define the audience targeting that the way we used to do. The system has now become intelligent enough to analyze your creatives, understand who is your ideal customer, and automatically deliver the ads to people who are more likely to buy your product. In other words, targeting now happens at the creative level, right? Your job is to provide strong, diverse creatives, and Meta will handle the distribution on its own to the right type of audience that are supposed to make sales on your particular website or products. Now let us understand. अब creativity वाले part पे आ जाते हैं. Earlier what used to happen कि people are putting a lot of interest targeting, age, gender, इन सब करके बहुत सारे variations बना लेते थे हम लोग. एक ही graphic को लिया, उसको multiple locations पे हम put up करके we used to run ads. But now things have changed. Now Meta is saying on its own कि आपको ad set level पे कुछ करना ही नहीं है, आप graphic level या फिर creative या फिर video level पे आप काम करो. So what is the creative winner ratio? अगर आप 10 creative बनाते हो at the agency level, since we are in this niche from the last 6 years now, so at the agency level अगर हम लोग अपना performance देखें throughout different ad accounts, what we are seeing, we are able to hit 15 to 18% of creative ratio. मतलब कि अगर हम 10 क्रिएटिव्स बना रहे हैं उससे एक या दो क्रिएटिव्स विनर निकलते हैं, एंड दैट इज द केस विद मोस्ट टॉप मार्केटर्स इन द मतलब कंट्री या फिर वर्ल्ड वाइड में बोलूं, बिकॉज दिस सम रेशियो दैट आई हैव टेकन इज फ्रॉम रेडिट. तो आई टुक दिस रेशियो फ्रॉम रेडिट. जनरली पीपल आर सेइंग टॉप एडवर्टाइजर्स रिपोर्ट ओनली 20 to 30% of the ads they test and succeed, meaning कि 70 से 80 ads don't even work for them, but they put budgets to find out if it is working or not working. और वो कैसे होता है वो हम अभी समझेंगे कि कैसे ad plan करनी है, किस तरीके के ग्राफिक्स होने चाहिए, किस तरीके की वीडियोस में, वो सब अभी समझेंगे.
इवन ह्यूज ब्रांड्स लाइक जिन ब्रांड्स का लाइक 10 करोड़ से 10 करोड़ पर मंथ से ज्यादा का भी स्पेंड है ना, उनके लिए भी ये पैटर्न सेम रहता है. लाइक मेटा इज नो डिफरेंट फॉर यू इफ यू आर स्पेंडिंग 1 लाख रुपीज, इवन इफ someone is spending more than like 10 crore rupees a month. Okay, the goal of creative testing is to fail fast एंड वेरी चीप. बेसिकली हम ये दोनों चीजें आज समझने वाले हैं कि फेल फास्ट कैसे करना है और चीप कैसे होना है. मतलब बेसिकली अगर हमने 10 क्रिएटिव बनाए और मैंने 10 क्रिएटिव के ऊपर लेट्स से पर डे 1000 रुपीज लगा दिया, तो 10,000 रुपया पर डे टेस्टिंग के ऊपर डाल रहे हो. तो हम आज ये समझेंगे कि 10,000 की जगह पे क्या पता हम टेस्टिंग 6,000 में खत्म कर सकते हैं क्या, और उसका लॉजिक क्या होना चाहिए, और उसमें कौन से टॉप मेट्रिक्स हैं जो कि आपको ध्यान में रखने हैं, जिसको आप जल्दी से जल्दी टेस्ट करके नई इटरेशंस बना सकते हो. तो वो सब चीजें हम लोग अभी समझने के लिए मतलब आगे बढ़ते हैं. ओके, सो क्विकली आइडेंटिफाई लाइक 20% ऑफ द विनर्स. मतलब अगर आप जनरली समझोगे 20% आर द विनर्स. मतलब एट ए इनिशियल लेवल जब आप काम स्टार्ट करोगे 10 to 15% विल बी द केस. With a period of time, maybe 6 months, 9 months down the line, you will be able to see 20% at a consistent month-on-month basis where you are able to get the winners regularly for your particular ad account. Okay. Now let us move to the next part. Broad concept. I got a message here. Okay. Will you be able to show? Yeah, sure. I'll come to those points a bit later than that. Okay. सो ब्रॉड कंसेप्ट फॉर मेटा एड क्रिएटिव. बेसिकली हमने जो क्रिएटिव्स के ऊपर बात करी कि मेटा के ऊपर एड सेट लेवल पे अभी ज्यादा कुछ नहीं होता. मेजर प्ले इज ऑन द मेटा एड क्रिएटिव्स पार्ट. बेसिकली वी हैव डिवाइडेड द होल क्रिएटिव वाला सेगमेंट इनटू दीज 10 सेगमेंट्स. दीज आर वेरी ब्रॉड कैटेगरीज दैट वी हैव डिफाइंड कि इन्हीं कैटेगरीज का ऊपर नीचे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगा के वी विल बी एबल टू फाइंड आउट द विनर्स फॉर आवर डिफरेंट ब्रांड्स दैट वी आर वर्किंग विद. लेट अस से हमारा कोई ग्राफिक है दैट इज बेस्ड ऑन अ हेडलाइन. तो मैं इसका पहले एक बार रेफरेंस ओपन कर लेता हूं सो यू विल गेट टू सी. ओके, so basically this is one creative that is like this. Why choose curvy? Okay, this is one, this is two. Basically they sell bralette. So what we are doing here, we are comparing the ultra soft bralette of curvy to another regular bralette that is available online. तो उनका मैंने कुछ लिस्टिंग लिखी, इनकी कुछ लिस्टिंग लिखी and try it today with a particular call to action. So this is the type of graphic that we created. It comes under the banner of us versus them. अब ये us versus them का एक डिजाइन है. इस तरीके के 10 और thousands of designs बन सकते हैं. This is just one type of the graphic that I just showed you. Okay. Now moving on to the second part. Let us say this thing. So basically this is another brand by the name Kindly. उनके लिए हमने ये ट्रेंड हाईजैक मतलब सूर्या भाई वाला एक साउथ की मूवी थी, उसके लिए हमने ये ग्राफिक पर्टिकुलरली डेवलप किया, जिसमें सूर्या भाई मेरी टाइमिंग तो जवाब दे चुकी है, फिरोज भाई टाइमिंग दिखा है, प्लीज वाइब्स लगाना. तो इस तरीके से हमने एक मीम टाइप का या फिर ट्रेंड के बेसिस पे हमने ग्राफिक डेवलप किया. तो दिस इज अ टाइप ऑफ थिंग. अब इसमें भी थाउजेंड्स ऑफ वेरिएशंस बना सकते हैं आप. This is again social proof where we are putting this along with this. This is a social proof kind of a graphic. Okay. Then this is a review type of a graphic. ये एक डिजाइन है. I'm not saying कि सिर्फ ऐसा ही ग्राफिक बन सकता है रिव्यू में. There can be thousands of iterations in this just review thing. But I'm just showing कि रिव्यू का ग्राफिक बनता कैसे. This is the review type of a graphic. Okay. Moving forward, this is a problem hesitation solution kind of a graphic जहाँ पे हम this problem we are highlighting. This is the solution that we are highlighting for this particular like type of issue that is hair loss. Okay. Moving forward, this is the another type of graphic that is offer driven. यहाँ पे बहुत आप clearly देखोगे special offer this time. This is very bold and clearly written here. That's why this is a offer driven particular graphic. Moving forward to this is a objection handling. मतलब generally अगर कोई blades वगैरह ये razor खरीदता है, तो what is the objection that they face? We write that particular objection in this way, and then we give the call to action. Harry's for only this thing, $5. So this is another type of a graphic. This is a graphic that is dependent on a headline only. There is nothing else, just a headline like this. That's it. And then this is a graphic that comes with a myth and a fact like it can be a FAQ also. जनरली आप देखेंगे कि आपकी जो ऑडियंस होती है वो लोग कमेंट करती है कि हमें ये इशू है, ये इशू है, उसको लेके भी आप लोग मिथ वर्सेस फैक्ट का ग्राफिक डेवलप कर सकते हो, राइट. Going forward to this is a benefit driven कि अगर आप बाली जाना चाहते हो तो this is the thing, and then these are the 4-5 things that we can offer to you as a package of wholesome. So these are 10 different type of graphics that I have just showed you जो कि इसके अंदर आता है. अब
क्या होता है कि इन 10 टाइप के ग्राफिक्स को ही आपको फर्दर, मतलब ग्राफिक्स या वीडियो जो जो भी आप बनाना चाहे, यही 10 टाइप की सेट्स होते हैं. मतलब these are the broad categories that I have given. Now you can make multiple tens of thousands type of graphics based on these particular ideations. Okay, so moving forward to this thing कि अब टेस्ट करना है. Okay, Aditya, you have some question. Yeah, please, can go ahead. Yeah, anyone else have some question? They can please raise your hand and I can unmute and move to the second part then. Yeah, sure. So no one has any kind of question, so let's start from here. So part number 2 में start करते हैं. Now let us assume that that a brand, any brand has created, let's say 10 kind of graphics based on these particular broad concepts of headline, benefit. और किसी भी एक ग्राफिक में हम लोग टेस्ट करेंगे सिर्फ एक चीज अभी के लिए. When you are doing it for the first time, you need to test one thing at just one time. That is, अगर कोई ग्राफिक बन रहा है उसमें आपको चलती हेडलाइन प्लस बेनिफिट नहीं कर देना है. हेडलाइन है तो सिर्फ और सिर्फ हेडलाइन के ऊपर टेस्टिंग हम स्टार्ट करेंगे. ओके, लेट्स से वी स्टार्ट द वीरो बोर्ड टेस्टिंग फ्रेमवर्क. मैं आपको टेस्टिंग का फ्रेमवर्क अब बताता हूँ कि हाउ वी नीड टू टेस्ट. कैन यू सी द स्क्रीन? आई थिंक यस. ठीक है, cool. बेसिकली अभी हमने डिस्कस कर लिया फर्स्ट फेज में कि मेटा में चेंज क्या आया है. मेटा में चेंज ये आया है कि हम लोग एड सेट लेवल पे बहुत ज्यादा टारगेटिंग ना करें. दैट इज नॉट प्रेफर्ड. अगर आपके लिए चल रहा है तो इट माइट वर्क फॉर द नेक्स्ट 2-3 मंथ, बट डाउन द लाइन 6 मंथ्स या 12 मंथ्स डाउन द लाइन वो चलना बिल्कुल ही बंद हो जाएगा. एंड मेटा नाउ सेज फ्रॉम देयर एंड ओनली कि आप लोग टारगेटिंग के ऊपर ज्यादा फोकस मत करो. आप लोग मेजरली फोकस करो कि क्रिएटिव्स किस तरीके के बनाने हैं. राइट, तो हैविंग सेड दैट वी मूव ऑन टू द पार्ट कि हमने क्रिएटिव्स के फॉर्मेट देख लिए. ब्रॉड लेवल पे हमने समझ लिया कि क्रिएटिव्स 10 तरीके के होते हैं. उन 10 में आप मल्टीपल आइटरेशंस बना सकते हो. मैंने उसके लिए आपको ये भी दिखा दिया कि 10 क्रिएटिव्स किस तरीके के बन सकते हैं. उसमें आपके मल्टीपल आइटरेशंस यू कैन मेक फॉर योर ओन ब्रांड. ओके, नाउ वी आर कमिंग टू द सेकंड पार्ट. लेट्स से हम लोग यहाँ पे अज्यूम कर चुके हैं हमारा एक ग्राफिक बन चुका है. नाउ दैट ग्राफिक विल बी टेस्टेड ऑन मेटा. Now how that will be tested? There are two formats of testing. There can be multiple many, मतलब एक ही चीज के multiple permutation and combination लगा के आप बना सकते हो variations. But these are the two major strategies that we as a company handle. एंड जो हमारे peers हैं यहाँ पे जहाँ से हम लोग भी सीखते हैं, जहाँ पे चीजें चलती हैं, डिस्कशंस होती है, कम्युनिटी में बातें होती है, मेजरली पीपल टॉप मार्केटर्स जो भी अभी फॉलो कर रहे हैं, दैट इज दीज टू थिंग्स दैट आई जस्ट शो यू राइट नाउ. ओके, इसमें ये भी बता दूंगा कि बजट कितना लगाना है और कितने टाइम में बंद करना है. व्हाट आर द रूल्स दैट यू कैन फॉलो. सब्जेक्टिव है, बट यस आई विल इन्फॉर्म यू अ लॉट इन डिटेल इन दिस थिंग. नाउ लेट अस मूव टू दिस पार्ट वेयर, मतलब आई एम जस्ट अज्यूमिंग यहाँ पे कि आप सबने ही कुछ ना कुछ एड वगैरह चलाया होगा. सो दैट आई एम जस्ट अज्यूमिंग कि आपने एड्स मैनेजर थोड़ा ब्रीफ में देखा होगा. Because I won't tell you very basic things. I'll straight away give you the strategy part, what you need to implement to do the testing. सो बहुत ही सिंपल है, कुछ भी नहीं करना है इसमें. एक कैंपेन डेवलप करना है. दैट विल बी सेल्स कैंपेन विद एनी नो अदर ऑब्जेक्टिव. मुझे ट्रैफिक ग्राफिक कुछ भी नहीं चाहिए. विद अ सेल्स ऑब्जेक्टिव कैंपेन क्रिएटेड. Yes, Aditya, you have a question, then I'll start. Yeah. Aditya. Aditya, you can unmute yourself, I think. Then you can speak up or just drop a message here. I'm not able to do unmute for you. Maybe you can just drop a message. I'll start from here. Okay. श्योर. सो कैंपेन लेवल एक बनाना है. उस कैंपेन लेवल के अंदर हमारे पास 3 एड सेट रहेंगे. लेट्स से उस 3 एड सेट के अंदर कोई भी टारगेटिंग नहीं रहेगी आपकी. मतलब टारगेटिंग वाइज जैसे आई मेंशन हियर ब्रॉड विदाउट एनी जेंडर, एज, इंटरेस्ट, बिहेवियर, कुछ नहीं टारगेटिंग करना है. इन नॉट इवन द जेंडर ऑफ द पर्टिकुलर, लेट्स से व्हाटएवर यू आर सेलिंग, अगर वो वुमेन सेंट्रिक है तो लेट इट बी ब्रॉड. मतलब ये ना आपको समझना पड़ेगा. because we as marketeers from a very long time we have been trained here to put a lot of targeting, interest, behavior. बट अभी वो नहीं चल रहा है तो हमें उसको जबरदस्ती फोर्स नहीं करना कि नहीं ये तो ऐसे ही चलता है तो हम कैसे करेंगे. तो हमें इसको बिल्कुल ब्रॉड रखना है. कीप द एड्स ब्रॉड without any gender, age, interest, behavior targeting. Okay, this is something that you have to do for sure.
ओके, एक कैंपेन बना, उसके अंदर 3 एड सेट हैं, इन तीनों एड सेट के अंदर बजट 2x ऑफ कॉस्ट पर एक्विजिशन, एड सेट लेवल ब्रॉड, लोकेशन इंडिया। यहाँ पे मैं 2 ऑप्शंस दे रहा हूँ आपको, लोकेशन कैन बी इंडिया और एनी इन वन स्टेट या फिर सिटी, यहाँ पे मैं मेंशन भी करता हूँ एनी वन स्टेट और सिटी that drives top conversions for your particular product, for your brand. Let's say आपका woman clothing का business है, and you run ads for kurtis to sell across India, and then you see over a period of time कि महाराष्ट्र से, मुंबई से सबसे ज्यादा ऑर्डर आ रहे हैं या फिर दिल्ली से सबसे ज्यादा ऑर्डर आ रहे हैं। तो व्हाट आई मीन टू से, इस कैंपेन के अंदर जो भी आप टेस्टिंग करने के लिए जाओगे, यहाँ पे हम स्केलिंग की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ और सिर्फ टेस्टिंग की बात करें। टेस्टिंग करते टाइम आप इस पर्टिकुलर में एडसेट लेवल पे आप जो एज या फिर लोकेशन वाला जो फैक्टर होता है, वहां पे आप मुंबई महाराष्ट्र डाल देंगे या फिर दिल्ली एनसीआर डाल देंगे, सिर्फ वो वाला चीज रहेगा यहाँ पे। इन एडसेट लेवल कीप एवरीथिंग ब्रॉड, बजट 2x ऑफ कॉस्ट पर इक्वेशन, ये मैं बताता हूँ अभी कॉस्ट पर इक्वेशन कैसे एज्यूम करना है फॉर अ न्यू ब्रांड। अगर ब्रांड ओल्ड है तो यू ऑलरेडी नो कि कॉस्ट पर इक्वेशन कितना है। एंड व्हाट इज द लोकेशन, लोकेशन आइदर इंडिया or any one state or city that drives top sales for your business. This is one part of testing जिसको हम बोलते हैं ad set budget optimization। अब यहाँ पे आप समझिए ad set budget optimization में एक फर्क क्या है कि आप ad set लेवल पे बजट लगा रहे हो। इट मींस ये वाला ग्राफिक, ये वाला ग्राफिक, ये वाला ग्राफिक, तीनों में अगर आपने हजार रुपए लगाए तो तीनों को स्पेंड मिलेगा 1000। What is the difference in ad set and campaign budget optimization is this। बेसिकली कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन में क्या कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे हम कंट्रोल मोर टुवर्ड्स मेटा दे देते हैं। मेटा में कैसे देते हैं, कैंपेन एक हमने बनाया, उसके अंदर एक ही एड सेट बनाया, एक ही एड सेट के अंदर हमने ये बना दिया हमने 3 मल्टीपल एड्स, एंड वी आर लेटिंग मेटा टू डिसाइड कि कौन से पर्टिकुलर एड के ऊपर वो ज्यादा स्पेंड करना चाहता है। So this is the campaign budget optimization. This is ad set budget optimization. Ad set budget optimization is something that we prefer a lot more because यहाँ पे control मेरे हाथ में ज्यादा है, because मैंने हर एक ग्राफिक के ऊपर एक hypothesis लगाया है, कुछ I want to test. That's why I want each and every graphic to spend some amount. इस वाले केस में कई बार ऐसा हो जाता है कि कहीं एक ग्राफिक के ऊपर ही सबसे ज्यादा स्पेंड हो गया, बाकी 2 ग्राफिक के ऊपर स्पेंड नहीं हुआ। बट यस, दिस कैन ऑल्सो बी डन, बट व्हाट आई प्रेफर इज दिस, जहां पे मैं हर एक ग्राफिक के ऊपर पर्टिकुलर अमाउंट स्पेंड करूं टू फाइंड आउट दिस ग्राफिक इज वर्किंग और नॉट वर्किंग फॉर मी। ओके, if this is very very clear to you, then we move to the ppt again। बजटिंग फॉर क्रिएटिव टेस्टिंग, बेसिकली यहाँ पे कई सारे ब्रांड्स ऐसे भी होंगे जो पहली बार ऐड चलाएंगे या फिर पहली बार चीजों को देखेंगे, सारी चीजें फर्स्ट टाइम स्टार्टिंग में भी होता है। लेट्स से वी स्टार्टेड अ लॉट ऑफ ब्रांड्स फ्रॉम 0 to like 7 figure ऑफ रेवेन्यू, तो हमें उस पॉइंट ऑफ टाइम पे हमें ये नहीं पता था कि हमारा कॉस्ट पर एक्विजिशन होने कितना वाला है। कॉस्ट पर एक्विजिशन होने के नहीं पता होने की एक रीजन ये भी रहता है, एक तो डेटा जीरो है, दूसरा हमें ये नहीं पता लगता कि हाउ मच वी नीड टू स्पेंड ऑन एड सेट टू गेट सम काइंड ऑफ सेल्स। उसके लिए मैंने एक बेसिकली प्रेडिक्टर शीट बना ली है दैट यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि इससे सीपीए निकल जाएगा आपका। तो लेट मी एक्सप्लेन यू दिस थिंग। सो मैं हाइपोथेटिकल कोई प्रोडक्ट लेने वाला हूँ यहाँ पे, लेट अस से उसका कॉस्ट जो है यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दैट इज अराउंड 300 रुपीज। लेट्स से किसी एजेंसी को आपने हायर किया एंड देन यू आर पेइंग देम 50,000 अ मंथ फॉर द सैलरी पार्ट की मैंने उसमें फिक्स एक्सपेंसेस में हायर कर दिया। नाउ द प्रोजेक्शंस कम हियर, एवरेज ऑर्डर वैल्यू इज अराउंड 1000 रुपीज दैट यू आर सेलिंग एट। पेमेंट प्रोसेसर फी ये आपसे 2% लेंगे। एवरेज डिलीवरी कॉस्ट लेट्स से वो 125 रुपीज है। लेट्स से मिसलेनियस एक्सपेंसेस मतलब सैलरी स्टाफ रेंटल वगैरह लेके 5% के वो एक्सपेंसेस है। miscellaneous expenses comes out to be 50 rupees। expense per order comes out to be in total मतलब जो भी हमारा है expense per order comes out to be 515 rupees। ये आया कैसे वो भी अभी डिटेल में समझाता हूँ। Let us say you are doing an ad spend of 1 lakh rupees and you want a net ROI of 3x। It means you are projecting a sales of 3 lakh rupees। Number of orders comes out to be 3 lakh divided by 1000 rupees, that is number of orders comes out to be 300। So cost per equation comes out to be 1000 rupees। So this is the type of calculation that we do to find out the cost. I think the cost per equation is coming out to be wrong here. Let me, it should be 100। Give me 1 second। So projected sales, the number of orders divided by projected sales. Yes,
Thank you. There is some mistake in this thing because cost per equation cannot be 1000. It should be around 250 or 300 rupees. It says I am 3 lakh रुपए का, ठीक है. Should be around 1 lakh rupees का एडवर्टाइजमेंट. यस करेक्ट. मैंने प्रोजेक्ट सीरीज सिलेक्ट कर दिया यहाँ पे. Should be 1 lakh divided by, हाँ, this is full. I think yeah, I think this is right. This was the wrong formula that I entered here. So cost per equation का simple meaning ये होता है कि हमने spend कितना किया, उसके against में कितने number of orders आए. तो spend divided by the cost per equation. I just made the mistake of doing the sales divided by the number of orders. That was the mistake that I did. So cost per equation comes out to be 333 rupees. So now we understand कि अगर 10-15% या 10% हम RTO ले लेते हैं यहाँ पे, final number of orders comes out to be 270. Net expenses for these fulfillment of 270 orders comes out to be 287. प्रोजेक्टेड सेल आपने किया 3 लाख का, प्रोजेक्टेड पीएनएल कम्स आउट टू बी पॉजिटिव. अब इस पूरी कैलकुलेशन में 10 to 15 का एरर मार्जिन रहता है बिकॉज जीएसटी की कुछ कैलकुलेशन है जो कि हमने कंसीडर नहीं करी है, स्टाफ की कुछ कैलकुलेशन है वो हमने कंसीडर नहीं करी है. तो 10 to 15% का मार्जिन इसमें पूरे कैलकुलेशन में एरर रहता है. बट दिस शीट गिव्स यू अ डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में आपको मूव करना है टू फाइंड आउट कि आपका कॉस्ट पर इक्वेशन कितना बैठ रहा है या फिर आरओआई कितना बैठ रहा है, कहाँ पे आप ब्रेक इवन हो पाओगे. सो इफ यू सी नेट आरओआई अगर आपका 3x का बैठता है then you are breaking even and the cost per equation is coming out to be 333 rupees. Okay, so अगर हम इस assumption को ले लें कि 333 rupees हमारा cost per equation बैठ रहा है, now we come back to this PPT, then make the ads live. जैसे अभी हम बात कर रहे थे इन सब चीजों की एड सेट लेवल पे हम बात कर रहे थे कि दिस इज द टाइप ऑफ बजट दैट वी वांट टू पुट इन डिफरेंट एड्स. तो कॉस्ट पर इक्वेशन यहाँ पर आएगा. जैसे मैंने आपको लिखा है यहाँ पे बजट इज 2x ऑफ कॉस्ट पर इक्वेशन. दैट इज अगर हमारा कॉस्ट पर इक्वेशन 333 रुपीज आ रहा है, एक 333 रुपीज देके हम एक ऑर्डर ला पा रहे हैं, तो हमारा पर एड सेट का जो बजट रहेगा दैट इज 2x ऑफ 333, अराउंड 650 और 700 रुपीज यू कैन टेक. सो कमिंग बैक हियर, अब हम एज्यूम कर रहे हैं दोबारा से कि हमने ओके, थैंक यू तन्मय, आपने भेजा तो दैट वाज कूल, थैंक यू. सो बेसिकली सबसे पहले हमने समझा कि हमने मेटा में क्या चेंज आया, एडसेट लेवल पे हम नहीं कर पा रहे हैं. अब हम हमें किस लेवल पे टारगेटिंग करनी है. वी हैव अंडरस्टूड कि क्रिएटिव्स के अंदर हमने समझा कि हमारे पास 10 सेट ऑफ क्रिएटिव्स है दैट वी नीड टू वर्क अपॉन. नाउ वी आर मूविंग टू द वी मूव टू द नेक्स्ट पार्ट दैट इज एड्स लगाने कैसे, दैट वी डिस्कस कि एडसेट लेवल ऑप्टिमाइजेशन पे दैट वी प्रेफर टू कीप इन बिकॉज में कंट्रोल ज्यादा है मेरे पास. मैं हर एक क्रिएटिव के ऊपर कुछ ना कुछ बजट देना चाहता हूँ. सीबीओ लेवल में थोड़ा सा ऐसा हो जाता है, मेटा डिसाइड्स ऑन इट्स ओन कि वो किस पे स्पेंड करना चाहता है. देयर इज नथिंग राइट और रॉन्ग, दिस इज जस्ट द वे दैट वी वर्क. ओके, नाउ talking about the budget, after doing this CPA का calculation, we understand this thing कि how long to keep this test live. Let's say मैंने आपने भी कोई एजेंसी हायर करी, आपने किसी के साथ काम किया, फ्रीलांसर के साथ काम किया, आप खुद ऐड चला रहे हो, नो नीड टू हायर एनीवन, आप खुद ऐड चला रहे हो. हाउ यू विल मेक द डिसीजन कि कोई ऐड बंद करना है, कोई ऐड चलाना है, बिकॉज एडसेट लेवल पे हमें डेटा दिखेगा, राइट, डेटा दिखेगा एंड कितने टाइम पीरियड में हमें एक डिसीजन लेना होता है कि दिस ग्राफिक इज नॉट वर्किंग, दिस वीडियो इज नॉट वर्किंग, दैट आई हैव मेंशन्ड हियर. बेसिकली दिस इज वेरी सब्जेक्टिव. जब मैंने कैरियर स्टार्ट किया था मे बी थोड़े टाइम पहले की, जब बहुत ही इनिशियल फेजेस थे मेरे डीक्यूसी में, तब मैं 7 से 8 दिन भी ले लेता था टू डिसाइड if a graphic is working or not working. With time, as I have written here, with experience you might start cutting the losers in a day or two also. That can happen with time. That is not something जो कि day 1 पे आपको मिल जाएगा, बिकॉज कई बार क्या होता है आपके इमोशंस अटैच हो जाते हैं कि यार ये ग्राफिक तो मैंने बनाया, ये तो चलना ही चलना चाहिए. ऐसा जनरली कई बार नहीं हो पाता, राइट. तो इसमें हम समझते हैं कि रूल्स कैसे बना रहे. रूल्स अगर बना लोगे तो आपको कभी भी बजट फालतू का स्पेंड नहीं होगा. यू वोंट इन्वेस्ट टू मच into just running the like burnt ads. Okay, so most experts, मतलब ये मैंने Reddit से इसको ChatGPT के थ्रू हमने इसको डीप सर्च किया and then we found out Reddit के ऊपर लोग क्या कह रहे हैं. Most experts are saying that 3 to 4 days is a good time period to see ये किस direction में जा रहा है. Either it will make like some money out of it or it will be just going to zero.
Okay, if after 3 days, approximately 3 days, if an ad clearly underperforms, zero conversions, weak CTR, no ATC, मैं यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मैं impression, reach इन सब की बात भी नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ बात कर रहा हूँ जीरो कन्वर्जन, वीक क्लिक थ्रू रेट, नो एड टू कार्ट, इट्स सेफ टू कट द पर्टिकुलर एड। मतलब अगर 2-3 दिन में भी कोई भी एड टू कार्ट भी नहीं दिख रहा है तो फिर इसको क्यों ही चला रहे हो आप। टू बी स्टैटिस्टिकली मोर कॉन्फिडेंट, मैनी रिकमेंड कीप प्रॉमिसिंग एड्स अप टू 5 to 7 days। अब ये प्रॉमिसिंग एड का मतलब क्या है? बेसिकली कई बार फाउंडर्स होते हैं हमारे पास, मतलब हम लोग जैसे काम करते हैं, तो फाउंडर्स बोलते हैं कि हमारा ये जो पर्टिकुलर वीडियो है ये बहुत अच्छा चलेगा, तो शायद इस पे ना थोड़ा चलाओ। तो व्हाट वी अंडरस्टैंड एज परफॉर्मेंस मार्केटर्स इज दिस कि अब जब फाउंडर बोलते हैं ना, उनके पास बड़े सारे इंसाइट्स होते हैं मार्केट के, और अगर वो बंदा बोल रहा है कि इस एड को अपने को चलाना है, तो उसको हम फिर 5 से 7 क्या 10 दिन का भी टाइम दे देते हैं। सो दैट्स व्हाई आई मेंशन्ड हियर, that's why I mentioned here it is subjective to very everyone, but फिर भी मैंने यहाँ पे कुछ कुछ रूल्स आपको दे दिए कि ये आप फॉलो अगर ब्रॉडली करोगे तो you won't invest too much into a testing, you won't be attached to a particular set of graphic या फिर वीडियो जो कि सिर्फ और सिर्फ उसी को चलाना है और उसी से हमें सेल लेके आनी है, ऐसा कभी भी नहीं होगा आपसे। Yeah, I got just one question here. What about if the CPR or cost per purchase is too high? So, like that's a separate discussion to be done, but CPR, अब it depends ना आप किस niche में काम कर रहे हो। Like, I think you can send me your website once. We can discuss it towards the end of this particular call, and then we'll take it out from there, mind. Okay. So this is the rule that we are following for ad set budget testing, एंड उसके ऊपर हम कितना कितना टाइम देने वाले हैं फॉर अ पर्टिकुलर ग्राफिक टू मेक इट वर्क ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। बट यस, डाउन द लाइन 6 to 9 months डाउन द लाइन यू विल सी दैट विद इन अ डे और 2 day यू आर अंडरस्टैंडिंग कि यार ये ग्राफिक चलने वाला है नहीं चलने वाला। आउट ऑफ 50 मे बी 1 या 2 ग्राफिक ऐसे होंगे जिसमें आपको लगेगा नहीं इस पे तो चलाता हूँ मैं थोड़े दिन, तो दैट विल हैपन ओवर टाइम। बट फॉर द इनिशियल फेसेस दीज आर द रूल्स दैट वी कैन फॉलो। ओके, गोइंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट थिंग, नॉट स्टार मेट्रिक टू फॉलो। अब कई लोग मतलब there is nothing to there is nothing to say on the कि हम लोग impression count कर रहे हैं या फिर कोई फालतू की मैट्रिक जैसे कि फ्रीक्वेंसी वगैरह ये सब अभी कर रहे हैं नहीं कर रहे, बट नॉट स्टार मैट्रिक सिर्फ 4 से 5 ही होते हैं जो कि मैंने आपके सामने लिख दिए। अगर इफ any of these show some movement in their numbers, then only you have to run, otherwise not. Okay, प्राइमरी केपीआई फॉर ई कॉमर्स, ई कॉमर्स मतलब मेजरली यहाँ पे जो भी लोग हैं D2C से रिलेटेड है, मेजरली हमारा कॉस्ट पर परचेज का एक गोल होना चाहिए एंड देन रोएस का हमारा एक गोल होना चाहिए। कॉस्ट पर परचेज अगर लेट्स से हमने टारगेट किया कि अभी हमने टारगेट निकाला था 333 रुपीज हमारा 333 रुपीज हमारा कॉस्ट पर परचेज आ रहा है, राइट। बट अगर लेट्स से हमारा कॉस्ट पर परचेज हमारे ऐड में दिख रहा है कि 1200 रुपए का कॉस्ट पर परचेज हो गया, तो ऑब्वियसली दिस ऐड इज नॉट मेकिंग सेंस, देन वी हैव टू टर्न इट ऑफ। द सेकंड मेट्रिक इज रोएस ओनली, दैट रोएस अगर आ रहा है तो हमें चलाना है, अदरवाइज नहीं चलाना है। अर्ली डायरेक्शन मैट्रिक्स इज क्लिक थ्रू रेट, हेड टू कार्ट रेशियो। लेट्स से आपका आपने ऐड चलाया, मैंने कैसे बोला कि 2 दिन में भी मैं बंद कर सकता हूँ, कई ऐड तो मैं 1 दिन में भी बंद कर देता हूँ। जैसे 1000 रुपीज पर डे का एड स्पेंड बजट लगाया और उसमें मुझे पता है मेरा मेरा जो बेंचमार्क क्लिक थ्रू रेट है इट इज अराउंड 1.5-1.6%। बट मेरे केस में अगर उस पर्टिकुलर एड में मैंने पूरा आधा दिन लगाया, उसमें फिर भी मेरे पास एड स्पेंड में 0.5-0.6% ऑफ क्लिक थ्रू रेट दिख रहा है, तो आई विल नॉट इन्वेस्ट मोर टाइम इन 2 दिन में। अगर मुझे कोई एड टू कार्ट रेशियो ही नहीं दिख रहा है तो हाउ कैन आई इवन बेट मोर। तो दीज आर सम 4-5 मेट्रिक्स जो आपको देखने हैं टू मेक योर डिसीजंस फास्टर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। डोंट ऑब्सेस ओवर इंप्रेशन, रीच, फ्रीक्वेंसी, बहुत कुछ है मैट्रिक्स तो 36 मैट्रिक है मेरे पास। मतलब इन मेटा डैशबोर्ड इफ यू गो टू द रिपोर्ट सेक्शन यू विल बी एबल टू क्रिएट योर कस्टम मैट्रिक्स, और जो बाय डिफॉल्ट मैट्रिक्स है इट इज अराउंड 350-360 मैट्रिक्स है जो कि वो देते हैं कि आप ही देख सकते हो। तो क्या इतना देखना है हमें सिर्फ 4 से 5 मैट्रिक्स देखने हैं, उसके बेसिस पे हमें डिसीजन लेना है, आइदर वी वांट टू रन दिस एड और टर्न इट ऑफ। गोइंग टू द नेक्स्ट स्लाइड नाउ, दिस इज द summary of the whole discussion that we have done. So I'll just open up this Miro board for you and then discuss the thing. I'll just take more 10 more minutes of your time to make this whole thing clear to you, and then we can take on the questions and take things ahead from there. Now let's reiterate once, okay? Reiterate ऐसे करते हैं कि सबसे पहले हमने क्या समझा, मेटा में चेंज किया है।
एट सेट लेवल पे हमें चेंजेस होते हैं, एंड विद टाइम वी आर सीइंग क्रिएटिव्स के ऊपर ज्यादा फोकस करना। देन वी हैव अंडरस्टूड दैट एट सेट लेवल पे हमें बजट कितना देना है, कॉस्ट पर परचेज कितना होना चाहिए, एंड देन क्रिएटिव्स की कितने फॉर्मेट्स है। एंड नाउ वी आर एट द फेज जहां पे लेट अस सपोज आपने 15 क्रिएटिव बनाए, 15 क्रिएटिव में से आपके दो या एक विनर निकल गया। नाउ व्हाट टू डू नेक्स्ट, स्केलिंग कैसे होगी? स्केलिंग इस तरीके से होगी जो आपके सामने आएगी। सो दिस इज कॉल्ड वन टू मैनी क्रिएटिव स्केलिंग फ्रेमवर्क। लेट अस से आपका कोई ग्राफिक है, मेन हेडलाइन जिसका चल गया, विनिंग एंगल निकल गया, नॉट ऑल ब्रास आर बिल्ट इक्वल। लेट्स से हमने जो ग्राफिक आपको उसमें से पहले अभी दिखाए थे, उसमें से कोई एक ग्राफिक निकल गया जो कि विनर निकल गया। नाउ व्हाट वी डू हियर, वी मिक्स द परमुटेशन कॉम्बिनेशन जो हमने अभी पहले आपको बताया था कि 10 पर्टिकुलर सबसेट्स होते हैं। तो हेडलाइन को बेनिफिट के साथ मिक्स कर दो आप, नॉट ऑल ब्रास आर बिल्ट इक्वल, आवर्स डोंट रोल डिग और स्क्वीज। दिस इज हेडलाइन प्लस बेनिफिट। देन हेडलाइन प्लस रिव्यू, नॉट ऑल ब्रास मतलब सेम रखा हेडलाइन, एंड देन वी केप्ट द बेनिफिट रिव्यू, then headline, then again social proof, then headline, again the offer. So we make nearly 9 iterations of the same graphic या फिर सेम वीडियो। देयर इज नो हार्म इन डूइंग इट, राइट। फर्स्ट में हमने, मैंने आपको क्या थंब रूल बोला था कि एक ग्राफिक में एक ही कंसेप्ट लगाना है। नाउ व्हेन यू फाइंड आउट कि ये पर्टिकुलर टाइप ऑफ ग्राफिक, ये पर्टिकुलर टाइप ऑफ वीडियो चल रहा है मेरा, नाउ मेक मल्टीपल इटरेशंस ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग यूजिंग द concepts that I told you or the 10 concepts that I told you, and again test using the ABO setup or CBO setup, whatever you prefer. Over a period of time you will see you will be able to scale in a proper way over meta ads. So that is the whole soul of doing creative testing over and over again and again, again and again, and to find out the winners in a regular pace. So yeah, yes, that is the whole thing that I want to explain you guys. Now I would like to take any questions if you have for anything related to this particular webinar. Yeah, Aditya, so basically, what about if the CPR or cost per purchase is too high? So, ma'am, basically, the cost per purchase, cost per result or cost per purchase is dependent on the niche. Let's say आप अगर 10,000 को भी प्रोडक्ट बेच रहे हो, तो क्या पता आपका शायद cost per purchase 2,000, 2,500, 3,000 भी रह सकता है। या फिर कोई आप साड़ी, जैसे अभी ड्रेस पॉप करके एक कंपनी है, that important to touch. They are selling sarees and all, मतलब ब्लाउजेस वगैरह रहते हैं इनके, डिफरेंट डिफरेंट ये सब चीजें हैं। ओके, तो इनका जैसे इनके जैसे ये 10-11 हज़ार के प्रोडक्ट है, तो मे बी कॉस्ट पर परचेज इनका 2,500, 3,000, 2,000 रह सकता है। तो इट डिपेंड्स अ लॉट ऑन व्हाट काइंड ऑफ प्रोडक्ट यू आर सेलिंग, and then accordingly we need to find out the cost per purchase for that particular product over a period of time. And I hope maybe this answers your question. And Aditya, in that 3 orders, boss RTO के लिए तो अभी अलग ही discussion लगी है. I think that is not related to the webinar. If you have any other questions, please ask. No questions. Okay, thank you. Then मैं thank you for that help आपने भेजा यहाँ पे, तो that's cool. Okay. Yeah. Yeah, Devika, please go ahead. Okay. I'm not sure. I'm not able to unmute you. Can you please like drop a message, Devika? Yeah. Yeah. So I think we don't have more questions from you guys. So thank you everyone for. Okay, so एक last question लेते हैं. So women's clothing और order value to 2,000 से ज़्यादा है. Cost price में ads creative कैसे होनी चाहिए? आदित्य, एक बार इस कॉल के बाद एक बार डिस्कस करते हैं, ठीक है? So if I don't want to change the budget of that, so based on CPA, then we do it in 3 ads. So if I don't want to change the budget of the ads, नो नो, रनिंग एड्स पे नहीं छेड़ना है। नए एड्स जो करोगे वो आप इस दिस आंसर इज फॉर देविका। बेसिकली जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हो ना, रनिंग एड्स पे कोई चेंज मत कर देना। आप नए जो एड चलाओगे उस पे 2x CPA करके आप फिर एड चलाओ तो ज्यादा बेटर है। रनिंग एड्स की एक ऑलरेडी रनिंग हो चुकी है, वो ऑलरेडी बहुत टाइम चल चुका होगा। रनिंग एड्स पे कोई चेंजेस नहीं रिकमेंडेड है। आप जो भी नए टेस्ट करो वो इस फॉर्मेट से आप करके देखो, इट विल बी हेल्पफुल। Pratush, you can get in touch with Aditya once, and then we'll have a call plan. Okay. Okay. Thank you, everyone. Thank you for your time, and I hope I was able to explain you a lot of things. And in the next webinar, we will try to come up.
ये जैसे मैंने आपको टेस्टिंग वाला पार्ट बताया कि टेस्टिंग ग्राफिक्स वगैरह टेस्टिंग कैसे करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वेबिनार में हम लोग ऐसे ट्राई करेंगे कि क्रिएटिव्स कैसे बनाने हैं, वो मैं आपको और डिटेल में बताऊंगा। मतलब बिकॉज राइट नाउ आई टेस्ट इन अ वेरी ब्रीफ नोट, बट इसके ऊपर अलग से एक मास्टर क्लास हो सकती है, तो अपन वो करेंगे। ओके ओके, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, एंड यू विल गेट ऑल द रिकॉर्डिंग्स ऑन योर मेल। ओके, थैंक यू।